Good morning, sir. Uh, as we know that charge to mass ratio of electron is 1.75 888 into 10 raised 11 coulomb per kilogram. We have already studied that charge to mass ratio of electron E upon m is equal to V upon Rb. There is a one relation for charge to mass ratio we have already derived. Now we are going to find the value of V. If we change the value of V, means formula for V, then this equation will rearrange in other form. So now we are going to discuss derivation of velocity for charge to mass ratio of electron. So there is a method number 1. In this method we are using the definition of electron volt. Electron volt as we study in electrostatic, that energy gain or lost by an electron by moving between two points having 1 volt potential difference. But here is not the 1 volt potential difference, but there may be different value of voltages. But we are writing this equation as we know that electron volt is equal to 1 upon 2 mv square. In this case, this V which is capital or large, we are taking it as voltage potential difference, and in this equation small v represents the V for velocity. This equation is obtained by the concept if there are two plates, one has positive charge and other is negative charge. When we put any electron at this point, so this electron can increase its velocity in the direction of electric field, in the opposite direction of electric field. In this case, electric field is from positive to negative. So this negative charge experience two forces. From this negative plate, the force of repulsion occurs, and from this positive charge, the attractive force is applied on this electron. Hence, this electron gradually increases its velocity or kinetic energy. So, in this case, electron gain energy by the voltage. If there is V volt and for example here is a 0 voltage, then this potential difference V produce a kinetic energy in this electron, and that kinetic energy 1 upon 2 mv square is equal to electron volt. This relation electron volt holds good for the potential difference is equal to work done per unit charge. By this equation we can write Q into V. If Q is equal to E, so EV is equal to work done or energy. So in this case, electron volt is equal to 1 upon 2 mv square. If we are trying to write the relation for this V, so we rearrange this equation. 2E capital V upon m is equal to V square. If this square shifted in this direction, so we obtain this result. V is equal to square root of 2E capital V upon m. If this value of small v is plotted or replaced in this equation, then charge to mass ratio is equal to 2E upon m capital V square root upon Rb. Charge to mass ratio relation is identical, similar we have taken, and Rb remains same, but instead of this V we have written 2E upon m capital V. But in this equation there is a problem occurs that E upon m is lying on both sides. So we are taking square on both sides. For example, E upon m square
is equal to, if we square on both sides, so in this side negative left side, E upon m whole square, and in this equation under root is square root is given by cancelled by the square, so 2 upon m capital V upon r square b square. The remaining answer will appear in this form. But now we can cancel E upon m in this square, so the remaining answer is E upon m is equal to 2 capital V upon r square b square. In this case, V for voltage potential difference provided by these two plates, 1500 voltage means total 1500 voltage. So this value varies according to the equation here, according to the situation, and R is the radius. If that is constant, then by this formula we can find the charge to mass ratio. This equation was the first equation and the primary equation. Second equation for the charge to mass ratio is E upon m is equal to 2 capital V upon r square b square. So now we are going to derive the second method, and second method is velocity selector method. So if you have understood that, I am going to erase it and derive another formula for the velocity. Here we are writing method number 2. In this case, we write it as velocity selector method. एक हमने टॉपिक पढ़ लिया, जैसे वेलोसिटी का वैल्यू हमने ड्राइव किया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड. ये लोरेंट्ज फैक्टर में भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था कि व्हाट इज द वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड. इफ इलेक्ट्रॉन बीम क्रॉसिंग थ्रू electric field and magnetic field which are mutually perpendicular undeflectingly, then Fe minus Fm is equal to 0, or Fm upon Fe is equal to 0, or we write it as Fm is equal to Fe. Magnetic force is equal to electrostatic force. It means if we provide magnetic field and electric field, then the electron would experience two forces. One is magnetic field in nature and other is electric field. In this case, electron beam experiences a force in downward direction that is magnetic in nature. But if we are providing simultaneously electric field which is positive in upward direction, then this electron beam experiences in upward direction. If these electric field and magnetic field are equal and opposite to each other, then this electron beam undeflectingly will hit at the point O. So Fm is equal to Fe. अगर ये दोनों forces एक दूसरे को cancel कर रही हैं तो particle यहाँ पर पहुंचेगा. तो we can write Fm is equal to Fe. Fm means Q V B and Fe means Q E. And in this case E Q में cancel हो जाएगी, बाकी V का जो value आ रहा है E upon B. Note in this case, whenever the charged particle has velocity equal to electric field upon magnetic field, it means it doesn't experience any deflecting force
and it can move in a straight direction, and it will hit at the point O. Now, if we replace the value of V in this fundamental equation, charge to mass ratio V upon RB, then we can get the result. Charge to mass ratio is E upon B divided by RB. Or we can write it as E upon RB square is equal to charge to mass ratio. So there is a third formula, third relation for the charge to mass ratio. Here we have different values or different variables on which this electron charge to mass ratio depends. But note, in all kinds of formulas, the answer remain same, 1.75 888 into 10 is 11 coulomb per kilogram. So there are three equations we have driven. Now we are going to drive another equation for charge to mass ratio. In this case, I'm going to erase these three values. We are writing it as derivation of radius. अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि चार्ज टू मास रेशियो को मालूम करने के लिए हमारे पास एक वेलोसिटी का वैल्यू है, आर का वैल्यू है, बी का वैल्यू है. मैंने वी के दो मुख्तलिफ तरीके सिखाए आपको कि किस तरह से वेलोसिटी को हम ऑब्टेन कर सकते हैं. बी तो अप्लाइड होती है, वो भी हमारे पास कैलकुलेटेबल है मैग्नेटोमीटर के जरिए से. बाकी अभी आ रहा है इसका वैल्यू आर का. अगर हम आर का जो वैल्यू है वो मालूम करना चाहें तो वी आर टेकिंग इन कंसीडरेशन दिस आर्क. If we complete the circle of this arc, so we can obtain this circle from this arc. Achha, in this arc there are 2 points, O and O prime. If we draw the O point at this and O prime at this point, so this arc will be appear like this one. So this deflection which occurs at this screen is represented by A. In this case also we are writing it as A. Now if we are interested in calculation of arc, then we are taking the arcs of this circle. In this case, this A is equal to this line, that can be represented by letter A, and this value will be represented by two terms which are known as BB. From this point to this point, we have the radius diameter that is equal to 2r. But if we are driving the relation from this point to this point, so we can write 2r minus a. So there is a term 2r minus a. अच्छा, एक सर्किल को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, और ये जो सर्किल बनी है वो ये इस आर्क की बनी है. ये यहाँ पर जो हमने आर्क लिया है, इस आर्क को अगर हम कंप्लीट कर लें तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा सर्किल का. इस सर्किल में हमने जो ए पॉइंट ली है वो क्या ली है, जितना वो डिफ्लेक्ट हुआ है. और ये जो बी लिया है वो बी क्या है, बी का जो वैल्यू है एक्चुअली यहां से इस पॉइंट तक है. इसका मकसद है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन, जहां से डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुई है, जहां से इस चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस होना शुरू हुई है, वो उस पॉइंट से लेकर स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है उसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहां पर अगर हम लॉ ऑफ कॉर्ड्स इस्तेमाल कर ले, लॉ ऑफ कॉर्ड्स में हॉरिजॉन्टल जो कॉर्ड्स हैं हम उसकी प्रोडक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल कॉर्ड्स के बराबर लेंगे परपेंडिकुलर कॉर्ड्स के. तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 2r minus a
2r माइनस a का वैल्यू ये आ रहा है और इसमें हम इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये बराबर हमारे पास आ रही है हॉरिजॉन्टल कॉर्ड्स की प्रोडक्ट के बराबर b मल्टीप्लाई बाय b. Now if we multiply this a with the bracket, so we obtain 2ra minus a square is equal to b square. This a is very much smaller as compared to b, and its square again will become very smallest, so we cancel it. A square is approximately equal to 0. The remaining answer is 2ra is equal to b square. If we are going to find the value of r, then we shift the value of 2a in this direction. So r is equal to b square upon 2a. So we have derived the value for radius by the two variables a and b. In this case, a is a deflection and b is the distance between the magnetic field and screen. So if we replace the value of this r in equation, then E upon m is equal to, v answer remains same and the value of r is small b square 2a and b. हम अच्छा 2a डिवाइड में है, डिवाइडेड बाय 2a मल्टीप्लाई बाय b. तो ये अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो चार्ज टू मास रेशियो हमारे पास आ जाएगा v वेलोसिटी, या लिख सकते हैं कि 2a v फॉर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय b स्क्वायर कैपिटल B. तो चार्ज टू मास रेशियो के लिए हमारे पास जो फोर्थ फार्मूला है वो ये आ गया. तो अब आप थोड़ा सा इसको समराइज कर लें. पहली इक्वेशन हमने मालूम कर ली, वो हमारे पास थी E अपॉन m इज इक्वल टू v अपॉन rb. और इसके बाद जो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई वो हमारे पास ये है 2a v अपॉन b स्क्वायर कैपिटल B. और तीसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई चार्ज टू मास रेशियो के लिए, वो हमारे पास थी E अपॉन r b स्क्वायर. ये तीन इक्वेशंस हमने भी ड्राइव कर ली. एक फोर्थ भी है लेकिन अभी वो मुझे याद नहीं आ रही, वो पहले ड्राइव कर चुका हूं अभी, लेकिन ज़हन पे नहीं आ रही. तो चार इक्वेशंस हैं हमारे पास जो यहाँ पर हम ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो को मालूम करने के लिए. अभी आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगी उस प्रॉब्लम्स में आपको मुख्तलिफ तरीकों से वेरिएबल्स दे सकते हैं. इसमें हम इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि चार्ज टू मास रेशियो v अपॉन rb, तो ये इनके जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स. क्योंकि अगर हम अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो क्या चार्ज बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा? नहीं, वो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं. तो चार्ज टू मास रेशियो को ये कैलकुलेट करने के लिए फैक्टर्स दिए गए हैं. इस वजह से नहीं दिए गए कि मैं यहाँ पर लिख सकूं कि चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v. ये गलत होगा ये लिखना, क्योंकि अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो क्या इन चीजों पर फर्क पड़ेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन का जितना मास है वो वही उतना कांस्टेंट रहता है. तो चार्ज टू मास रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये वाले जो वैल्यूज हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो अगर वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो रेडियस पर भी उतना ही फर्क पड़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएंगे. चार्ज टू मास रेशियो रिमेन्स है. तो चार्ज टू मास रेशियो के लिए जो ये वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स कैलकुलेशन के लिए हैं, ये डिपेंडेंस के लिए नहीं है कि ये वैल्यू चेंज करेंगे तो ये चार्ज टू मास रेशियो चेंज होता जाएगा. कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता. आई होप आप सबको समझ में आ गए होंगे ये कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मालूम कर सकते हैं. और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा. और इसके अलावा जो अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, उसको लाइक नहीं किया,
तो सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी कर लें, ताकि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आप तक वक्तन बवक्तन पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।